just had a great meeting, a really good, very productive meeting. I think you're going to have, hopefully, a really great mayor. The better he does, the happier I am. I feel very confident that he can do a very good job. I think he is going to surprise some conservative people, actually. He said a lot of my voters actually voted for him, and I'm okay with that. He wants to have a safe New York. Ultimately, a safe New York is going to be a great New York. We talked about Con Edison. We have to work a little bit on getting the prices because, we've gotten fuel prices way down, but it hasn't shown up in Con Edison. And we're going to have to talk to them. If we're sending them fuel at a much lower price than it was a year ago, which is true, we have to get Con Edison to start lowering their rates. Absolutely. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. We had some interesting conversation, and some of his ideas really are the same ideas that I have. And he said some things that were very interesting as to housing construction. And he wants to see houses go up. He wants to see a lot of houses created, a lot of apartments built, etc. And, we actually, people would be shocked. But I want to see the same thing. In the speech, you didn't mention anything about America or. We had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down. All things that I agree with. He'd like to see them come down, ideally by building a lot of additional housing. Yeah. That's the ultimate way. He agrees with that, and so do I. But if I read the newspapers and the stories, I don't hear that. But I heard him say it today, and I think that's a very positive step. I expect to be helping him, not hurting him. A big help, because I want New York City to be great. I think this mayor can do some things that are going to be really great. Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani administration? Yeah, I would. I really would. Especially after the meeting. Absolutely. We agree on a lot more than I would have thought. I want him to do a great job, and we'll help him do a great job. That's a very long drive. I'll stick up for you. The plane takes you 30 minutes, and driving takes you a long time. Do you view the mayor-elect as the true leader of the Democrat Party? And do you think Leader Schumer is a leader? Being the mayor of New York City is a big deal. Absolutely. I always said, one of the things I would love to be someday is the mayor of New York City. I think you really have a chance to make it great. I appreciate what Mr. President, you said you love. For some reason, the press has found this to be a very interesting meeting. The biggest people in the world, they come over from countries nobody cares. But they did care about this meeting, and it was a great meeting. I watched. I said, who is this guy? He was at 1, then he was at 3, then he was at 5, then he was at 9. Then he went up to 17. I said, that's getting a little bit interesting, right? And then all of a sudden he wins a primary that nobody expected he was going to win. It's a great tribute. I mean, it's an amazing thing that he did. Do you think you'll meet again in the future, throughout the administration? I think we will. I think we will. I hope we do. I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again. I think he wants to make it greater than ever before. And if he can, we'll be out there cheering. I'll be cheering for him. देखिए, दो बातें। पहली चीज तो उन्होंने मकौले पे बात कही थी। मकौले का देश के शिक्षा व्यवस्था पे औरों पे प्रभाव हटाना, इतिहास पर और चीजों पर प्रभाव हटने का काम तो कांग्रेस ने किया। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। और चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते रहे। लेकिन मुझे शशि जी से एक पूछना है कि देखिए, हम राजनीति में जब उतरते हैं, माना देश सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उतरते हैं, लेकिन जिस कारण से भी उतरते हैं, सामान्य ये माना जाता है कि हम एक ऐसे दल को चुनते हैं जिसकी सोच समझ, जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी आर्थिक समझ हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें लगेगा कि देश को फायदा होता है।
और इसीलिए हम विपक्ष में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे। मूलतः उनकी नीतियां देश के अहित में होंगी, आगे चल के उससे देश का हित होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि इनकी नीतियों में गैर बराबरी होगी, लूट होगी, कुछ लोगों के प्रति होगा और देश में उस तरह की प्रगति नहीं होगी जो देश की क्षमताएं हैं। तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चल कर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं वो मूल ही टूट जाता है ना। भाई मैं ये मानता हूं कि मैं कांग्रेस में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस देश का सबसे ज्यादा हित कर सकती है। आज आपको लगता है कि कांग्रेस की विपरीत जितनी नीतियां हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ की नीतियां हैं, समता के खिलाफ की नीतियां हैं, कैपिटलिज्म में कुछ ही लोगों के हाथ देश को साथ करने की नीतियां हैं, सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, इस देश में संप्रदायों के बीच में जहर फैलाने की नीतियां हैं, जात में और धर्मों में लोगों को बांटने की नीतियां हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई चोरी डकैती पैसे का लूट करे तो उसके ऊपर केस न करने की नीति है, ऑपरेशन के खिलाफ पीछे जाने की नीति। अगर आपको लगता है कि ये नीतियां देश के लिए बेहतर हैं और कांग्रेस की नीतियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की, ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। तो आपको, मुझे लगता है अगर आपकी ये सोच और नहीं तो फिर आप उसका एक आलोचना भी कीजिए। ठीक है, आप उस समय आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने थे, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा उनके सामने आप सच बोल सको। कुछ लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, जो सामने ताकत हो तो उसके सामने उनके अंदर से सच नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आजकल वैसे तो बात बड़ी वो करते हैं लेकिन उनके अंदर में डर और भय होता है, हिम्मत नहीं होती। चलो वो बात है तो ठीक है, लेकिन सही में अगर आपको लगता है कि नीतिगत रूप से आज बीजेपी या प्रधानमंत्री की नीतियां जिस पार्टी में आप हैं उससे बेहतर काम कर रही हैं, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप हिपोक्रेट हैं। NC should not be called Indian National Congress. It should be called Indira Nazi Congress, because they demonstrate Indira's emergency mindset and Nazi dictatorial behavior. If somebody praises the Prime Minister's speech, which is about larger issues, then a fatwa is issued against that person by the Congress, who talks about democracy in the entire country, but no democracy within the party. This is the same party when Shashi Tharoor ji just wishes LK Advani ji on his birthday, fatwa is issued. When he stands with the Sena, fatwa is issued. When he says that family politics has been perpetrated by the first family of Congress, then fatwa is issued. So they are showing their intolerant emergency mindset, and they talk about democracy across the country, but in their own party there is no democracy, and if you keep national interest above parivarik interest, then fatwa is issued against you.